इंडिया में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है पीसीओडी पीसीओएस पर्सनली? Indian women are more prone for this PCOS and PCOD genetically. हम अच्छा पेट के दर्द के लिए गोली खाते हैं, फिर जाके उधर पानी पूरी खाते हैं. During pregnancy, she has an hormone imbalance. During lactation, she has an hormone imbalance. So we women will be riding these hormones like we're riding a dragon. वुमेन को फिट दिखना है, यंग दिखना है, स्लिम दिखना है, एंड दे ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, योगा, डाइटिंग, पता नहीं कीटो डाइट, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? कैसे वो अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? Belly fat के लिए फर्स्ट थिंग reduce your stress. बोले तो फीमेल में उनमें भी मेल हार्मोन होते हैं. हाँ, ये जो है मैं बोलती हूँ कुदरत का ये है. पीसीओडी अगर किसी को हो चुका है तो, Definitely it can be reversed. एंड जो आपने बताया कि जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो एक आइडियल टाइमिंग क्या होता है वुमेन के लिए? Usually the period which ranges from days to 32 days. अगर मदर को पीसीओएस रहा है तो उनकी डॉटर जो है उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. हाँ. लोगों का एवरेज 6 घंटे भी साउंड स्लीप नहीं हो रही है. This is because of social media. बॉडी, हमारी बॉडी बता रही है हर बता समय रही पे. है. क्रेविंग है तो बता रही है, हाँ. वोमिटिंग है तो बता रही है, रही है. लूज मोशन है तो तो बता बता रही रही है. फीवर है तो भी बता रही बता है. दीज आर द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड Understand. अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल Lifestyle. एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस सिम्टम्स. फीमेल हेल्थ के लिए मैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये जो मिल्क शेक है इसमें मिल्क है और फ्रूट्स है. वी कंसिडर इट बोथ आर हेल्दी, राइट? बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन. हेलो दोस्तों, नमस्कार. मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में. और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है बिकॉज आज हम इसमें बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर, राइट? हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हमारे घर में हमारी मदर है, हमारी सिस्टर्स हैं. वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं हमारी फैमिली को बिल्ड करने के लिए, हम सभी की केयर करने के लिए. लेकिन कई बार इस पूरी प्रोसेस में वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं. एंड वुमेन हेल्थ में और खासकर आज की यंग गर्ल्स में एक बहुत कॉमन इशू है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, वो है पीसीओडी एंड पीसीओएस, राइट? एंड ये पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस तरह से आप इसे नेचुरल तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, राइट? और फीमेल इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो भी पीसीओडी है, पीसीओएस है. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं, इनका क्या रियल रूट कॉज है, और नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए आप इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है. तो अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज आपने इस पॉडकास्ट से क्या लर्न किया. और इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा. मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस पूरे पॉडकास्ट में आपको वो पावरफुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके द्वारा ना सिर्फ आपकी लाइफ चेंज होगी, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर डियर को ज़रूर शेयर कीजिए. तो इस पॉडकास्ट में मैंने हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं. उनके पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो एक आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं. सो आप सबके बीच में इन्वाइट करना चाहूँगा डॉक्टर सविता सूरी, ऑल द वे फ्रॉम मैसूर. सो वेलकम डॉक्टर सविता ऑन दिस Thank you. पॉडकास्ट. Thank you so much, Anup ji, and I'm really happy to be here with you. आपके साथ इधर रह के पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिला. थैंक यू सो मच. Great. So, without any further delay, let's dive into the podcast. So, hi, Dr. Savita मैम. आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में कि आपने समय निकाला, एंड यू बीइंग ए बिजी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, एंड आई एम श्योर आज के आपके इस पॉडकास्ट से बहुत सारी वुमेन्स को, यंग गर्ल्स को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट. Thank you, Anup ji. It's my pleasure to attend your podcast, and I'm really just wanted to, help the women out there who are suffering from PCOS or PCOD through your podcast. I think I'm blessed to have this opportunity. Thank you Great. so much. सो मैं जस्ट सीधा स्ट्रेट अवे बात करना चाहूँगा बिकॉज आज हमारे इंडिया में द फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस आर वेरी हायर. मीन्स पीसीओडी और पीसीओएस अकॉर्डिंग टू WHO दिस इज नंबर 1 रीजन फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक्चुअल में पीसीओएस या पीसीओडी होता क्या एक्चुअल में? हाँ. एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एक सरल भाषा में इसे समझें कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं. हाँ. सो 3 क्वेश्चंस इन वन दिस. अच्छा, PCOS और PCOD में बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स है, ओके. और ये जो सिम्टम्स है वो आती है हार्मोनल इम्बैलेंस से.
ओके, because women they have around 50 hormones in their body which helps them to go through their normal body functions. करेक्ट, और ये 50 hormones में क्या होती है, around 20 hormones they get imbalanced. ओके, Because of this imbalance, they'll end up with this PCOS or PCOD. We call it as let us just commonly call it as a polycystic ovaries, ओके, wherein the ovaries, which are the major component of producing healthy egg और उनके जो reproduction के लिए help करती है, those are really affected with these two problems. राइट, We call it as a polycystic ovary, wherein the ovaries will not be able to produce eggs, and also the ovaries fail to produce hormones so that it will not be able to initiate the menstrual cycle also. ओके। Yeah. सो अगर मैं देखूँ तो वुमेन की हेल्थ का जो सबसे बड़ा क्रिटिकल और इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसकी वजह से फिर वो आगे की पूरी जर्नी टेक ओवर कर रही होती है, कैरी कर, वही डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इट्स द बेस Yeah, ऑफ वुमेन हेल्थ, वुमेन लाइफ एक्चुअली, राइट? right. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेनी ऑफ द वुमेन्स आर नॉट एबल टू कंसीव, वो कंसीव करने में दिक्कत आती है, एंड दे गो फॉर IVF एंड लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, राइट? सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों बढ़ रहा है, राइट? इंडिया में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है PCOS पर्सनली? हाँ, इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इंडियन जो हमारा हेरिडिटरी जो जीन है, उनका जो मेकअप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पीसीओएस बहुत जल्दी आती है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस. इंडियन population is more this one prone for these things. Like that, Indian women are more prone for this PCOS and PCOD genetically. That's the first thing. And because of this, like lifestyles and diet, whatever has changed in their in recent years. And also there is one more research which says that after COVID, the number of cases of this polycystic ovaries have increased. It may be because of the COVID infection which they have undergone. Because of that the cases have increased. और मैक्सिमम देखिए, इसमें PCOS में और PCOD में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है. ओके, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा इन्फ्लेमेशन, और तीसरा मेल हार्मोन्स. ओके, मेल हार्मोन्स बोले तो मतलब फीमेल उनमें में भी मेल हार्मोन होते हैं? हाँ, ये जो है मैं बोलती हूँ कुदरत का ये है. कभी हर इफ यू इन ए मैन देयर आर 2 हार्मोन्स, मेल एंड female hormones. Both of them प्रोजेस्टेरोन will एंड be टेस्टोस्टेरोन? no testosterone, and male and female, both of them, both the genders are born with both the hormones. ओके, But ये ऐसा रहती है in female. Let us take the case of female. In women, it is like जो हमें दही बनाते हैं ना, दही बनाने के लिए थोड़ा सा हम ना एक दूध में थोड़ा सा दही ऐड करना खट्टा पड़ता डाल है. देती है? In the same way, in a women, to initiate her female hormones, they need little bit of male hormones. ओके, To initiate the normal work of function of female hormones, they need a little bit of जो male hormones ओके, to kickstart the normal functions, राइट, right? So that should be in a very optimum level, राइट, to normal level. और ये जो मैं I talked to you about the 3 factors where there is an inflammation, insulin resistance, and because of this the level of male hormone increases. Once the level of male hormone increases, then the female body starts behaving like a male. Like she won't get her periods properly. Now she is able to conceive, and she starts getting facial hair and other things. So because of these hormonal changes, then she starts getting the mood swings. Yes, because body is thrown out of balance now. राइट. Right? Because of increased male hormones. तो कई बार वुमेन्स के लिए जो मूड स्विंग्स होते हैं, राइट, बीइंग ए हस्बैंड, तो इट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स? Yes, hormones. Because women undergo a lot of hormone changes in a month. I'll ओके, tell you. Premenstrual. Before she is starting the menstrual cycle, she undergoes a hormone imbalance. And before she is starting ovulation, she undergoes a hormone imbalance. ओके, And once again, once the ovulation is over, then also she will be having the hormone imbalance. And during pregnancy, she has an hormone imbalance. During lactation, she has an hormone imbalance. So we women will be riding these hormones like Okay. riding a dragon. I call it as we will be riding a dragon. ये अच्छा, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो कभी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, तो दिस इज द रीजन बाय हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. हार्मोन इम्बैलेंस से. सो जैसे आपने बताया PCOD में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, बढ़ बिकॉज ऑफ दैट दीज कॉम्प्लिकेशंस Yes. कम अप.
सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? क्या रीज़न है? लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, इसकी वजह से हो रहा है। प्राइमरी रीज़न क्या है अच्छा, जिसकी वजह से प्राइमरी ये रीजन ये हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है? या हार्मोन इम्बैलेंस, प्राइमरी रीजन मैं बताती हूँ, इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. ओके, और बिकॉज आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओके। आई हेल्प वीवन टू रिवर्स इट बेस्ड ऑन आयुर्वेद प्रिंसिपल्स. आयुर्वेद में एक बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं. हुँ, बोले तो इफ यू वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, देयर आर 3 पिलर्स. जैसे आप जब भी एक टीपॉय बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल एक पॉइंट लिया सर। three legs are very much important for करेक्ट। for हुँ, anything to be stable, right? So like that in Ayurveda they say 3 things, very vital things, that is they call it ahara, that is हुँ, food, nidra, निद्रा, sleep, ओके, vyayama, that is exercise. करेक्ट। These 3 are very very vital. These 3 things should be given to your body. Only you have to give that much which is required, हुँ, not more, not less. फूड भी ऐसा देना चाहिए, हुँ, कितना चाहिए उतना ही देना चाहिए. और एक्सरसाइज आपको कितना चाहिए उतना ही करना. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज. You might have seen some people to reduce their weight. Even it holds good for even for insulin resistance. I'm talking. करेक्ट। If they are going to exercise a lot, like कुछ मेरे बहुत सारे पेशेंट है जो मैम वेट रिड्यूस करने के लिए मैं 8 किलोमीटर दे वॉक गो करती क्रेज़ी। हूँ. देखो क्रेजी, 8 किलोमीटर करके बाद में आके जुम्बा करते हैं और कार्डियो करते हैं, सब करते हैं. नो They रिजल्ट। think that no result. Why is this is happening? Because for her body this exercise is causing an inflammation. वेरी नाइस। Because of inflammation she is getting insulin resistance. Because of insulin resistance once again the male hormone is विशियस increasing. साइकिल कीप्स ये ऑन। it's a vicious cycle. इसलिए आयुर्वेद में जो बनाते हैं, हमारे आयुर्वेद में इतना बनाते हैं, एवरी पर्सन इज ए डिफरेंट पर्सन, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. आपको जो फूड सूट होता है वो फूड शायद मुझको सूट नहीं होता है. करेक्ट। आपको जो एक्सरसाइज सूट होता है वो मुझे सूट नहीं होता है. जब मैं the food which it is not suited for me, if I'm going to eat it, even though it may be healthy, that is causing inflammation in me. ओके। You got my point? सो देयर आर 3 प्रकृति वात, पित्त एंड Yeah, कफ एंड there are अकॉर्डिंग 7 टू prakritis are told, but anyway, roughly they divide it प्राइमरीली into primarily those things. And according to your prakriti, you have to take food. हुँ, According to your prakriti, you have to exercise. ओके। And according to your prakriti, you have to do all your day-to-day life activities. लाइफ़स्टाइल एक्टिविटीज़। You cannot exert yourself much, nor you can just slow down too much. ओके, गॉट द पॉइंट। Yeah, because any change in this, because PCOS is a very, as I told you, it has got around 20 hormones are imbalanced here. Even if one hormone out of these things, if one hormone gets a little bit more in increase or something, it goes imbalanced, and whole thing it goes imbalanced. पीसीओडी और ओबेसिटी का क्या कनेक्शन है? अगर किसी वुमेन का वेट बढ़ा हुआ जनरली हाँ. फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए वुमेन्स को बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बाहर काम करने नहीं जा पा रहे होते हैं या वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या बहुत लोगों को मैंने सुना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डायबिटीज रिवर्सल कोच, पीपल कम टू मी कि उनको लगता है मैं घर के हाउस होल्ड काम कर रही हूँ, दिस इज हाउ दिस, ये मेरा वर्कआउट हो गया है. तो इज देयर एनी कनेक्शन Yeah, ओबेसिटी एंड even पीसीओसी? PCOD, yeah, obesity and PCOS का एक गाढ़ा रिश्ता है. So whosoever are obese, there are every chances that they may get the PCOS or PCOD, polycystic Correct. ovaries, they may get, but it is not the rule. ओके, ऐसा है, even I see many girls who are moderate weight, healthy weight, but still they have PCOS. Okay. There are girls who are very lean, we call it as a lean PCOS. They also have this hormone imbalance. वजह क्या है? As I told you, that's inflammation. इन्फ्लेमेशन. And because of inflammation, even though they are on a healthy weight range, or even though they are lean, still the inflammation is there, insulin resistance is there. ओके, Obesity is definitely 80% of obese PCOS patients are obese, ओबीस, but remaining 20% they fall into this category. ओके, they have different reasons. Yeah, different reasons. Like as I told you, inflammation, because inflammation and insulin resistance, they go hand in hand. Correct. Even in diabetes also,
I think that's the main reason. Whether This is the inflammation only reason. increases the this one Because insulin resistance. in my personal practice, I have seen like हाँ, people come with a different expression, right? हाँ, It's something, insulin resistance is something, it is expressed in different individuals in different form of different disease. forms, yes. like किसी को हाइपोथायराइड के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ, किसी को पीसीओएस के फॉर्म में दिख रहा है, हम्म, किसी को हाई लिपिड प्रोफाइल के, किसी को हम्म, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, हम्म, किसी को टाइप 2 डायबिटीज. हम्म, द प्रॉब्लम इज वन दैट हम्म, इज इंसुलिन रेसिस्टेंट, हम्म. बट इट इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट इंडिविजुअल इन डिफरेंट वे. Here I want to put my word here. The thing is PCOS जो मैं बोलती हूँ मैं उसको ऑक्टोपस बोलती हूँ. ऑक्टोपस या क्यों बोले तो ऑक्टोपस जैसा उसका जो प्रे है उसको हाँ. हम क्या वो प्रे को ऐसा जैसा जकड़ उसका लेता है. प्लेट जकड़ लेता है. हाँ हाँ. वैसा ही जो PCOS का ये है लेग्स है इट विल बी गोइंग रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. फॉर एग्जांपल every PCOS girls she has one or the other problem with joints. एग्जैक्टली. Joint pain complain करते हैं, muscle pain complain करते हैं. They are very quickly prone for heart diseases, राइट. increased triglycerides, यस. fatty liver, and their digestive system is inflamed. They always complain of acidity. They always complain of constipation, करेक्ट. right? And also they have a brain fog. That's a Hmm. very, very important thing. Whenever a young girl who has got, I have seen many young girls who are attending 10th or 12th, they have this PCOS, they cannot concentrate on their studies. ओके. With this pressure, the stress increases. With this, the academic pressure, whatever girls they Correct. undergo, and because of the pressure, the stress increases. Stress increases the inflammation. Inflammation once again increases this PCOS the cycle symptoms, goes and on. yeah, they very quickly they become pre-diabetics. I Correct. have seen girls becoming insulin resistant and pre-diabetic very quickly. एट व्हाट एज, लाइक जो आपके पास जो पेशेंट आते हैं, लगभग किस एज की से पेशेंट्स को आप देख रहे हैं, मतलब जो टीन एज गर्ल्स हैं, यंग एज गर्ल्स हैं? हाँ, मैं जो देख रही हूँ जैसे even before the PCOS is getting diagnosed, they already have the insulin resistance. It is there. I have also seen It's there, right? So because whenever you cannot just because even they you say recommend in any test? research, yeah, I recommend the test. Okay. I recommend them as soon as the patient comes with an irregular menstrual cycle or any of these problems, immediately say go and get the insulin test. That is like first I will get all this FBS and this one HbA1c, all those things I will get it Okay. tested first. And once we establish that, then it's time for us to alter their diet, alter their So now coming to the solution. Yeah. कि PCOS क्या होता है, we understood. Yeah. What are the complications, right? Now, what is the solution for this, right? Allopathy में लोग तो medications लेते हैं, hormonal pills लेते हैं. But as per Ayurvedic perspective, right? You have thousands of teenage girls and women for last 30 years, right? Right. So आप क्या suggest करते हैं, क्या process बताते हैं, क्या protocol? So I would like to first thing is they should get their body analyzed. okay. कौन से बॉडी टाइप है उनका वो ठीक है. पता करना चाहिए और जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू ईट द फूड. Okay, तो वो कैसे पता करते हैं? What is the way? ये जो you have to go to an Ayurvedic physician and get it Okay. done. That's otherwise देखिए I'll tell you. Is there any question answer? Is there any app or test? Yeah, there are a lot of apps Assessment on the tests. assessment जो है इसमें ऑनलाइन में है वो करना. But definitely a good Ayurvedic practitioner with a nice this one experience in the Correct. clinical practice, they'll be able to identify what's going on with them. Okay. And also with the diet part, Ayurveda gives around 3 rules. First one, eat according to your body type. That's the first rule. Okay. Second rule, we have a good combination and bad combination of foods. Very true. ऐसा समझिए आपको लगेगा ये हेल्दी रहेगा ये जो फूड का है. I'll take for an example milk shake. It's a common one which is ये जो मिल्क शेक है इसमें मिल्क है और फ्रूट्स है. We consider it both are healthy, right? But according to Ayurveda, it's a very bad combination. Why? Viruddhahar. Viruddhahar. Why? Because once it goes inside your body, it's going to produce toxins. Inflammation and toxin. These toxins produce inflammation. This inflammation causes the insulin resistance. Insulin resistance causes the PCOS. Okay. It's like a chain reaction. So can you please share some common food combination which people generally consume in their day-to-day life? Yeah, that's the first thing is milkshakes. Milk safe. Fruit milkshakes like the mango milkshake जहाँ पे वो milk add करते हैं और mango add करते हैं. खट्टे फलों के साथ मिल्क का कॉम्बिनेशन करने हैं. Not खट्टे फल, सब फल. Any fruits. Any fruits. You are Okay. not supposed to take milk with any fruits. You are not supposed to take dairy products with non-vegetarian food.
ओके That's a compulsory. For 24 to 48 hours, you are not supposed to consume any dairy products. आज जो लोग ऐड कर रहे हैं, चीज ऐड करते हैं हाँ और कर्ड क्रीम लेते ऐड हैं करते हैं, यस यस कर्ड ऐड करते हैं जो इसमें, एंड इवन बॉइलिंग ए कर्ड, all these things are considered as viruddhahar because when it goes inside your body, it's going to cause you an inflammation. ओके And because of that, so this is the first one. You have to always eat a good combination. This one, Joe, what is good combination? We add this wherever we are preparing some masalas. All our Ayurvedic food types are followed by our ancestors, right? Wherever there is a pepper, we add this turmeric. Turmeric and pepper is a very good they combination. absorb the Yeah, because increase the absorption of yeah, turmeric pepper curcumin. is going to release the curcumin in your body, and the curcumin is absorbed into it. The research have shown that. So That that's why they very intelligently designed the combination. That's why yes, we use these ingredients in our that's why I dishes. tell all my patients, go to your grandmother Right. and listen to her recipes first. Take all the recipes what they were using or her mother was using, and then start using it. Your body is going to accept it. And also genetically, we have the genes of our forefathers, Right. and our digestive system, it is based on those genes only, right? Very It true. works on those genes. So we are not accustomed to cheese. हमारे फोरफादर कौन भी आइसक्रीम नहीं खाए थे, जीन नहीं ये चीज नहीं खाए थे. So whenever you are taking this cheese or something which is a foreign food, that's going to cause you an inflammation because your genes are not adapted to digest that. When there is an indigestion, the toxin formation is there. Toxin formation, we call it in Ayurveda ama. The toxin formation, it leads to inflammation. Or inflammation is the major cause Major of cause for chronic this, degenerative disease. yes, chronic, and also the major thing, insulin resistance. Insulin resistance. Yes. So, ma'am, PCOD के लिए what kind of the lifestyle you already told. Now, can it be preventive or reversed, right? अगर किसी को हो चुका है तो Definitely it can be reversed. okay. There are And plenty how much of time it girls. takes generally? I usually tell them, if they follow all the Ayurveda principles, whatever tell them, or the diet and everything, within 3 to 6 months they can reverse it. But consistency is the key. Consistently they have to practice, consistently they have to exercise, and consistently they have to follow it throughout their lifetime, because if they don't want to get fall trap into all these chronic diseases like fatty liver or heart diseases, cardiac diseases, or increased cholesterol, if they don't want all these diseases, then they have to continue these things lifelong. Okay, it's not like कि for 5-6 months किया फिर वापस से पुराने वो mistakes पुरानी No, गलतियाँ ये तो जंक फूड खाना शुरू कर दी. yeah, I just refer this for as a Vikram or Betal. Okay. Because once a Vikram goes and throws that Betal, once again it comes and sits back on his this one. That's why it's right? called reversible, not cure. Not cure. So if you think that okay, you have reversed, you are getting regular menstrual periods, and you got a child also very easily, and now don't think that PCOS is gone out of your body. Okay. If you once again follow the same thing, the whatever you used to do it before, once again it will come back to you. A little bit of negligence in your exercise, or even a 15 days of negligence, Okay. the hormone starts get imbalanced again. So people ask like when I counsel them कि diabetes तो reverse हो गया है, तो अच्छा ये lifestyle कब तक follow करना पड़ेगा? It's a very simple question. Yeah. So I just tell them कि कब तक आप healthy रहना चाहते हो? Till the last breath of your life, right. then follow the right. Otherwise, almost the same thing like diabetes ka or PCOS, they go hand in hand. yes. Like everything, like exercise, food style, diet, everything, they go hand in hand. Same root thing. cause is same, na? Root cause is same. Insulin resistance. Yeah, yes, insulin that's resistance. Right. All right, great. So, ma'am, is there any link of PCOS with gestational diabetes? Because if a woman is having PCOS, so is there any chance or risk of developing a woman gestational diabetes? Yes, definitely. If a girl with a PCOS, if she becomes pregnant, okay, then because already she has insulin resistance, right? Where in pregnancy, it's very common to have insulin resistance. Right. Okay. And this doubles up. That means the insulin resistance due to pregnancy, and also the insulin the resistance because of this PCOS, and she will get directly into the gestational diabetes. Around 80% of girls, they go into this, the PCOS, the girls who have this PCOS, yeah, they develop gestational diabetes. Yeah, gestational diabetes. Okay. So once a lady develop, or any woman develop gestational diabetes, is it reversible? Yeah, but what we suggest, they have to prevent it.
Okay. Reversible means once she delivers a child, once again, if she follows a diet, it is reversible. But some people go into a permanent diabetes because they keep on taking the insulin and other things to continue with the diabetes. I mean, the pregnancy, So and is I have seen a lot of women, right? Those who have developed gestational diabetes, the doctor immediately start in giving insulin to them, right? So is it safe for their health or the fetus insulin? yeah, because here we have to consider both fetus and mother. Okay. We can't take a chance for them not. We can't advise them not to take insulin during. I Okay. mean, gestational diabetes, because the doctor will be fixing the insulin based on her sugar level every day to Okay. day sugar level. Mhm. So here, I feel it is better if we not interfere in this until Mhm. she delivers the child. Okay. Yeah, Afterward, you can take the yeah, lifestyle after we changes can, and all yeah, those things. once if she delivers a child and once she comes back to normalcy, Hmm. like then later we can just once again put her on the diet and lifestyles and whatever is needed for her, and then we can think of reversing it again. Okay. Yeah, even there are this one, the girls who are on insulin during the pregnancy. Pregnancy, yeah. Yeah, then they will definitely come back to the normal. This one they can just taper down the insulin dosage, and little bit of time they may take little bit of tablets and other things, and then they can just get rid of the tablets also once if they follow the perfect path of this diet and lifestyles. So you suggest you prescribe this diet and lifestyle protocol to the clients that you are coming to you. Yeah, yeah. But whatever the girls who are in my community who are reversing PCOS, many have very quickly reversed and they have become pregnant. For them, I ask them to continue with the same PCOS diet throughout the pregnancy. So Okay. this prevents gestational diabetes Okay. because we are putting them on anti-inflammatory and this one, anti-diabetic foods and food style that Hmm. a very low glycemic index food and Okay. more of the So could you protein. please आप थोड़ा बताएंगे कि क्या डाइट आप बताते हैं, क्या लाइफस्टाइल आप बताते हैं, कि प्राइमरली डाइट आप क्या Primarily, बताते हैं yeah. ड्यूरिंग Primarily, प्रेगनेंसी और diet pregnancy में ना or पीसीओएस रिवर्सल के लिए? PCOS. Acha, whenever she comes to me, first we'll do a body analysis, and later on, I give them a particular digestion. I am not going to advise them any intermediate fasting or some intermittent fasting or something like that. So I give them a diet wherein they will take high protein breakfast. Okay. In morning they have to take a very high protein breakfast with cereals with what we call it as micro Millets. siridhanya millets, right? Yes. We call it in Kannada siridhanya. That Mhm. millets, we ask them to take millets and high protein with the good fiber and good fat. Like Good. almonds, good fat Okay. means almonds, flax seeds, or whatever it is. So that Yeah. will be their breakfast, sumptuous breakfast we ask them to take. And then we ask them to take a little bit of mid-morning fruit, one small cup of fruit, so that they're not going to fast for a long time. And once again in afternoon, same thing. Like every meal of them should contain a good amount of protein. Okay. So Yeah. protein means what exactly you're suggesting? I suggest them like dals Hmm. and these sprouts of ये जो मूंग रहती है मूंग की Hmm. और चना Okay. मसूर वो सब जो वेजिटेरियंस को है मशरूम्स बट आई डोंट सजेस्ट पनीर Okay. because for PCOS there is a strict no for dairy products. Okay. No dairy, no milk, no curd, no paneer, no cheese. And then again, in other things for non-vegetarian people, I suggest them, they we call it as a organic egg, not the one which is the one which is hormone induced eggs or chicken or something which is a hormone administered. Hmm. This one, and also we strictly restrict them by taking this red meat. Red meat. Yeah, red meat बोली तो just like mutton or Avoid sheep, करना है. yeah, avoid करना है. Fish ले सकते हैं. Fish ले सब. They can take fish, they can take prawns. Okay. Seafood and fish they can take, Yeah, but fish red meat avoid red कर. meat avoid करना चाहिए. Highly Completely red meat inflammatory. highly inflammatory. Because आयुर्वेद के मुताबिक जो what we suggest, even the red meat like we call it as like a beef or pork, they are also like mammals. Correct. Right? They also have the same hormone as we have. Mhm. So when they are consuming the red meat and the same thing, it goes into their body. So that further increases their hormone imbalance. So डॉक्टर साहब तो आपने बताया पीसीओएस के बारे में एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं.
एंड जो आपने बताया कि जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो एक आइडियल टाइमिंग क्या होता है वुमेन के लिए? Usually, the period which ranges from 28 days to 32 days, we ओके, consider it as a normal one. ओके, Anything less or anything more is abnormal. इज एबनॉर्मल एंड Abnormal. इट इज फॉर राइट फ्रॉम द यंग एज टू टिल मेनोपॉज? Yeah, till menopause. दिस इज द स्टैंडर्ड This is a टाइमलाइन? standard time. ओके, Say we can even sometimes we consider even 25 days as normal when they are 2 to 4 reversing days a plus PCOD, minus. plus or minus. Yeah, Okay. 2 to 4 days. But I this one is ideal is between 28 to 32 days, 2 or 3 days plus or minus. That's okay. Okay. And there are some problem like women complain when they are having जब उनके पास hormonal imbalance होता है and they are having different acne, right? So कहीं मैंने I was just going through. So is there any difference between normal acne because of puberty and there is acne means PCOS की वजह से जो acne होते हैं, क्या हाँ difference है दोनों में? ये अच्छा ये जो प्यूबर्टी से एक्ने होती है हम्म, इट गोज ऐसा है इट कम्स एंड गोस ओके, कम होते रहती है ज्यादा होते रहते हैं बट वेर एज इन पीसीओएस देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्ने फॉर्मेशन इन योर ओके, जॉ लाइन जो एक्ने फॉर्मेशन होती है दैट इज अ टिपिकल साइन ऑफ पीसीओएस ओके। एंड जैसे डायबिटीज़ में वो एक कनेक्शन होता है जेनेटिक्स की, अगर मदर फादर को है तो बच्चों को भी होने के चांसेस रहते हैं, तो क्या पीसीओएस में भी ऐसे ही रहता है कि अगर मदर को पीसीओएस रहा है तो उनकी डॉटर जो है उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? हाँ देर इज ए very good connection between what I can say parents if they have diabetes. हम्म, Even the girls are prone for PCOS ओके, because they have developed the insulin resistance because of the hereditary, right? ओके, And also, it's not a rule, हम्म, but it is definite that if parents have diabetes, she is more prone for diabetes if she, I mean, डोंट टेक केयर practices ऑफ द लाइफस्टाइल। unhealthy. Yeah, if she doesn't take care of her diet and this one, this is there. And also, here, Dr. Anup, I want to put a word. See, mothers have to educate their girls about PCOS. Sometimes I have seen mothers, they will not be knowing that they have a PCOS or PCOD, but anyhow, they got pregnant and they got a child, and they think they will be getting periods, say, think once in 3 months or once in 4 months. Then they will teach their daughters if their periods are delayed. Then they will convince them, Acha, I used to have this type of periods like once in 3 months, for once in 4 months. You are my daughter, so you too have this thing in you that once in 3 months or once in 4 months it's normal. Many of my girls never knew that this this one the normal period goes from 28 days to 32 days is a normal. They say, ma'am, I never knew that the periods are not the normal periods extend to only these days. खैर, I thought even getting period once in 3 months, once in 4 months is normal to me because my mother taught me so. ओह, So this is a very wrong notion where mothers have to educate. That's why I ask mothers to come to my this one session and get themselves educated with the PCOS so that they can educate their daughters on this. ओके। सो डॉक्टर सविता मैम, दस आप किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, आप हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट? किस तरह से, क्या प्रोग्राम है आपका? इफ मेरा एनीवन वांट टू लर्न हाउ टू रिवर्स पीसीओडी पीसीओएस? Yeah, I conduct 3 steps of this one. First one, I will educate them about the Ayurveda principles. I educate them about the PCOS and I educate them how it is harming their life. ओके, And the second level is I teach them how they have to, I mean, take their food according to their body type, how they have to exercise, and how they have to consistently continue it. और इसमें एक होता है अनुप जी, everybody will teach a diet, everybody will teach them exercise, but no one teaches them how to handle stress. करेक्ट, Stress plays a very, very important role more than anything. I have seen my girls who have gone stress free and lost their weight without doing any exercises, वाओ, अमेजिंग, especially the belly fat. राइट, Because see, there is a cycle. When you're stressed, the hormone cortisol comes, and once the cortisol hormone is there in your body, it leads to the belly fat accumulation. Once the belly fat accumulation is there, then it affects your insulin resistance, and also then it becomes, we call it as a diabetes of ovaries. डायबिटीज ऑफ ओवरीज, Ovaries. We Okay. call it as a diabetes, even though she may be lean, she may be ideal weight, but Okay. if she is having a belly fat, Okay. then we call it like a diabetes of ovaries. Then the insulin resistance develops and she gets into the PCOS. सो मैम आपने जो बताया बेली फैट, सबसे बड़ा जो टिपिकल चैलेंज या खासकर वुमेन को फिट दिखना है, यंग दिखना है, स्लिम दिखना है, एंड दे ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, योगा, डाइटिंग, पता नहीं कीटो डाइट, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? सो
अकॉर्डिंग टू यू किस तरह का, कैसे वो अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? बेली फैट के लिए फर्स्ट थिंग रेड्यूस योर स्ट्रेस पहला रिड्यूस योर थिंग स्ट्रेस। रेड्यूस स्ट्रेस ओके। स्ट्रेस स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज ऑफ बेली फैट ओके। वो रेड्यूस करना है एक एंड स्लीप फॉर 8 hours कंटिन्यूसली ओके। 8 hours ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी स्ट्रेस और मैं उनके लिए ये लोगों के लिए मैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एक छोटा सा रूटीन बताती हूँ बताइए प्लीज। yeah morning as soon as you should wake up early morning that we call it as a brahmi muhurta wherein they have to get up wake up between 5:30 to 6 o'clock and as soon as they wake up they have to consume cinnamon tea we ओके। call it as cinnamon tea में तो बहुत रेगुलर चाय नहीं है हम्म। जस्ट पानी में थोड़ा सा cinnamon stick डाल दालचीनी डाल के। दालचीनी डाल यस, के एंटी डायबिटिक होता है। yeah anti diabetic होती है they have to take it in empty stomach ओके। and after this they have to sit for 20 minutes they start with 10 minutes meditation take it to 20 minutes 10 minutes compulsory meditation 10 minutes compulsory pranayam or deep breathing ओके। okay this much and then later go for around 30 minutes walk ओके। eat the food according to your prakriti हम्म। this is a routine what I tell them and also I would like to for belly fat girls who are struggling to lose their weight I want to give them a night routine would you mind if I Please, this one please. yeah the first thing what they have to do at 5:30 somewhere around between 5 to 5:30 they should go for a small walk of 20 to 30 minutes ओके। after coming back they have to take a bath ओके। okay and later let them do the work till they have to take an early dinner a light dinner before 7 o'clock and after that let them continue with their work think if they are going to sleep this is the average think they are going to sleep at 10 o'clock they have to shut down all the electronic gadgets at 9 o'clock यही तो मैम नहीं होता है। नहीं हो रहा इंस्टाग्राम की रील चलानी है, नेटफ्लिक्स देखना, है no if व्हाट्सएप you want चलाना है रात नहीं तक। आपको think करना पड़ेगा whether you want to lose belly fat or whether you want to watch the Instagram you have to prefer the things here स्टेटस भी चेक करना है, बहुत सारे काम है। ये तो है ये because of this problem girls are just are unable to reverse their PCOS देयर लाइफ बिकम हेल लाइक Hell आई हैव yeah, सीन yeah. लाइक इन द हम बोल रहे हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, ना बट एडवांस इन व्हाट टर्म्स, राइट? सफरिंग इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, कॉम्प्लिकेशंस आर इंक्रीजिंग, राइट? एंड जस्ट बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन द changes, लाइफस्टाइल, yeah. राइट? हार्ड वर्क की जरूरत ही नहीं है। जरूरत द ही सेम थिंग गोज फॉर द डायबिटीज रिवर्सल and the same principle I test is available before going to sleep at least 2 hours before. Just avoid this screen Yes. time, because if you're not having this because the screen is going to affect your melatonin secretion, and if you're not having sufficient melatonin, And also it just activates your brain. It won't allow brain to go to go to right, sleep. Why we ask them to shut down all their electronic items, because once if they go on, if the stimulation is there to your brain, it won't allow you to sleep. right, And your alert brain active, becomes very active. hmm, It won't the melatonin won't secrete. So Yeah. you should tell your brain that it is time to sleep. correct, How you are going to tell your brain it is time to sleep? You have to make your brain to understand that this is time for sleep. right, At 9 o'clock, they have to just shut off everything and then think they're going to bed they're going to sleep at 10 o'clock. At 9:45, just sit on the bed and do a small meditation. So that मैं इतना ही बोलती हूँ. Past, I give a very simple tip for them. जो सुबह से हुआ, forget it. आप शायद बॉस के साथ आप झगड़ा करके रहेंगे, आप हस्बैंड के साथ झगड़ा करके रहेंगे. Forget everything. It's not going to come back to you. And tomorrow future, we don't know what's going to happen. So what is the present 15 minutes you have to meditate? Just you want sleep. okay, Tell your brain you are going to sleep. Meditate only pointing towards that. अच्छा मुझे अब सोना है वही मेरा मकसद है correct. माई मेन इंटेंशन नाउ फॉर 15 मिनट्स आई वांट टू स्लीप फॉर 8 hours अब सास ने ये ऐसा बोला था, हाँ पड़ोसी ने ऐसा बोला था, यस है ना? वो सारा प्रोसेसिंग रात को ही होता है बेड पे कोई जाते होती है समय। बैठने जाने से दे शुड नेवर डू दैट मैं वो हो गया जो हो गया वो तो वापस नहीं अब ये जो आप कर रहे प्रेजेंट इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू ये मिनट जो मैं आपके साथ स्पेंड कर रही हूँ दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक इन माई लाइफ अगेन सो इसलिए आपको जो हो गया जो फ्यूचर है आपको पता नहीं है जो हो रहा है अच्छा प्रेजेंट क्या करना 15 मिनट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पुट एन आयरन कर्टन बिहाइंड द पास्ट एंड पुट एन आयरन कर्टन फॉर द फ्यूचर Okay. जस्ट यू शुड बी लाइक दिस आज जैसे हम
हास कोई लगाते हैं ना, what Correct. we call it, I don't Blinkers. know, it's a blinkers, yeah, हाँ. like this. You should, your concentration should be only towards getting a sleep for 8 hours. Okay. इतना करो, do a deep breathing exercise Hmm. so that a lot of oxygen is supplied to your brain Mm-hmm. and your brain relaxes, and just keep on telling your brain that you are going to sleep now. That's it. Keep on telling your body you are going to, this is your rest time. You should advise body to rest. Hmm. थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रिलैक्सेशन करो, जैसे लेग से रिलैक्सेशन योग निद्रा. या योग निद्रा से ऐसा, जस्ट यू go on assuring your body that you are going to get sleep now, and you're going, because our body heals in our sleep. Hmm. Very If you don't give time for your body to heal, then how can you think of healing diabetes or healing PCOS? You cannot heal. Right? Very Because true. of that, Ayurveda says that these are the tripods of your life. Nidra, Ahara, Vyayama. Nidra is the main part. And according to latest report, it has been found India is the second most sleep deprived country. लोगों का एवरेज 6 घंटे भी साउंड स्लीप नहीं हो रही है. नहीं, this is मतलब because of social media. सोशल मीडिया उसको देखना है, वो बाजू वाले क्या कर रहे हैं, बाजू वाले क्या पहन रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं. ये दिस इज कम्प्लीटली ये व्हाट आई कैन से, दे जस्ट crave for recognition, or they crave for some they are looking attention. the meaning in the Meaning. materialistic thing, right? Right, materialist. And they are just want to impress the others by Right. wearing different kind of clothes, different मतलब just show off के लिए चल रहा है, के right? लिए चल रही अंदर से खोखले हैं, अंदर से रिलेशनशिप भी खराब है, अंदर से स्ट्रेसफुल भी हैं, लेकिन बाहर मेकअप बहुत अच्छा कर रखा है. है. And this is how like I met a lot of people over there. या उन्हें समझ ही नहीं कि जिंदगी हम किस डायरेक्शन में जी रहे हैं, हाँ. भागे जा रहे हैं बस. और अनूप जी, मैं और भी एक मेरे लड़की लोगों को सिखाती हूँ. प्लीज. आप जाके इतना सारा पैसा खर्च करके आप स्कैनिंग को पैसे दे रहे हैं, हाँ, हजारों रुपए से. हर दिन सुबह में उठ के 10 मिनट आपके बॉडी स्कैनिंग कर लो. यू स्कैन योर Beautiful. ओन बॉडी. Very लाइक nice. अच्छा बैठो, एक आपका जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टोस, Hmm. just move it and see whether you have a pain there. Concentrate on your feet, whether you have pain there. Concentrate on your knees, concentrate on your muscles, concentrate on your stomach, concentrate on your reproductive system. Feel whether it is responding to you, feel whether it has pain, whether what problem it has, and just scan your body, what problem is it, because your body tries to talk to you, which you are neglecting. As a samjhe, I will give you one example. As a samjhe, today night you ate pizza, Okay. and today evening you ate pizza, you are sleeping, then your body starts talking to you by telling, it gives you an acidity, pizza idhar aa jati hai, nahi to you will start getting stomach pain, or you will discomfort, and you won't get sleep, Hmm. and next day you will be getting these are all your body talking to you. Right. And people think it's a बीमारी है, कोई problem बीमारी है. ये बीमारी नहीं है, Right. ये आपका बॉडी बता रहा है, see this pizza is not suiting me, don't eat henceforth. No, no, no. They'll take the painkiller tablet. Painkiller. And again, they eat one more One pizza. more pizza next day. है ना, that's what I teach them. Crazy. Do a body scanning every day, Wow, amazing. so that आज ऐसे समझिए, आप एक मिलेट खाए आज, think that I have ate ragi today, somebody told me to eat millet, I ate millet today. Hmm. And that millet, whether it suits me or not, your body tells that. Exactly. The doctor is not going to tell whether it is allergic to you or not, but your body tells you which food is suiting you, which is not suiting you. Correct. For some people, when they eat fish, say suddenly the next day they will start passing loose motions. Hmm. Right? So it says, I don't need fish again. Correct. आपका बॉडी बता रहा है आपको. Hmm. फिर भी जाके फिश को जाके फिर once again they eat, because of their taste or tongue, to please their taste buds, they go and eat it. My God. So I really resonate with you, and I completely मतलब understand कि हमारी बॉडी के पास इतनी सुपर पावर हीलिंग इंटेलिजेंस है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्स सिम्पटम्स. बॉडी अगर फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, गलत खाना चला गया तो वॉमिट करता है right. या लूज मोशंस लगता है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपनी बॉडी को हील करने के अलाउ ही नहीं करते. तुरंत कुछ मेडिकेशंस वी ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस. राइट, obstruct the process more than we don't listen to our body. आप ऐसा देखिए, फिर there are lot of cats and dogs outside. Correct. Who is treating them for PCOS, or who is अरे they are reproducing like anything. Right? Yes. Why they are doing? In a cat कुछ बदहज़मी हो गया, हाँ. वो क्या करता है, whole day he won't eat anything. It Very goes and eat grass and it vomits.
राइट। right? So something like that. All animals, they listen to their body. They have their own method of, I mean, recovering from the problem what they have. But whereas we humans, हम अच्छा पेट के दर्द के लिए गोली खाते हैं, फिर जाके उधर पानी पूरी खाते हैं, राइट? और पेट के दर्द के लिए और कुछ आपको उल्टी शुरू हो गया, अच्छा वो नहीं, वी विल टेक सम डॉम्पेट और समथिंग लाइक दैट, एंड वंस अगेन वी गो एंड ईट पिज्जा देयर. We never listen to our body, but the body asks you, tells you that this thing is not suiting me, don't do this, अमेजिंग। but we never do that. अब ऐसे ही मैंने देखा है कि चूंकि 45-50 की एज में फीमेल्स में जॉइंट पेन बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? एक तो वेट बढ़ा हुआ है एंड दे गो टू द डॉक्टर एवरी मंथ फॉर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, राइट? वो पेन के दे देंगे टैबलेट्स, कैल्शियम ही दे दिया। तो इज देयर एनी आयुर्वेदिक रेमेडी टू टेक केयर ऑफ दिस जॉइंट पेन? Yeah, the first thing is because the once again menopause में जो है hormone imbalance है. ओके। When there is a hormone imbalance, there are a lot of deficiency of minerals and calcium and everything. And minerals and calciums are stored in our bones. So आपको अब अभी ऐसे भी होती है, when there is this hormone imbalance and other things, your digestive system is inflamed, and because of that it will not be able to absorb many nutrients from the food what you are eating. राइट। सो इसमें हमको थोड़ा सा बहुत प्रोटोकॉल लगती है, हमारे पहले इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना चाहिए. इवन ओबेसिटी से हमको इन्फ्लेमेशन आने का चांसेस रहते हैं, करेक्ट। सो वी हैव टू रिड्यूस अवर वेट. एंड देन ये जो बोन का ये जो प्रॉब्लम रहती है, नी प्रॉब्लम रहती है, फर्स्ट थिंग इज दे हैव टू पे अटेंशन टू रिड्यूस देयर वेट. मेनोपॉज में एज यूजुअल वेट बढ़ के रहती है, करेक्ट। दे no, and also it is difficult to lose weight because of slow metabolism. राइट। So but how we can increase our metabolism with the simple things like reduce stress and drink, as I told you, the cinnamon tea, जो दालचीनी का tea, और also the foods, healthy food खाने शुरू कीजिए, and processed food avoid कीजिए, और as much as possible जे मैदे का रहता है, sugar का रहता है, jaggery, even I said don't take jaggery. यस यस। Some people they feel that instead of sugar I eat jaggery, Exactly. but jaggery is as it they are like twin brothers. करेक्ट करेक्ट। Even jaggery is as harmful as sugar. परफेक्टली फाइन। All right, like that you can just alter your food diet, and थोड़ा सा exercise कीजिए करेक्ट। और stress कम कीजिए, and okay, you just go into something when you are in a menopause. If you want to go for some spiritual thing that which is going to reduce it, उतना हार्मोन बैलेंस कीजिए एंड सप्लीमेंट्स लीजिए लाइक विटामिन डी, कैल्शियम, दैट विल रिड्यूस नी पेन. ओके। सो जैसा आपने बताया कि आप कुछ न्यूट्रिशन या कुछ हर्ब्स हैं ले सकते हैं, तो पीसीओएस में वेट लॉस के लिए या वुमेन हेल्थ के लिए क्या बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जो एक वुमेन को लेते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे फीमेल हेल्थ के लिए? अच्छा, फीमेल हेल्थ के लिए मैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए शतावरी. Okay. Shatavari capsules, they can either take it in form of powder or like this one capsules. And another one we call it as a spearmint tea. spearmint बोले तो ये जो हमारा पुदीना रहता है ना, हाँ. पुदीना का अलग एक पौधा है, उसमें एक 3 तरह का जात रहती है पुदीना में. Okay. उसमें जो हमें रेगुलर चटनी में यूज करते हैं, that is another one. Normal way. Spearmint is another one, which is, it will be like a spear, the leaves will be like a spear. That spearmint tea, it is available everywhere. Okay. So you can take this spearmint tea, 3 cups of spearmint tea. It works very well. Okay. After breakfast, after lunch, and after dinner. 1 cup each. Spearmint tea. Spearmint tea. SPEARMINT. Spearmint tea. Okay. It's very, very helpful. So it just need to boil in some water? Yeah, boil in some water. As we do, boil in water and just ले सकते हो उतना ही बस. Okay. Steep it in water and take 1 cup each. 1 cup each. Yeah. And it is useful for? Useful for reversing. It very fantastically it reduces male hormones. Okay. So for women health, right, or hormonal imbalance? Hormonal imbalance, they can take shatavari and spearmint tea. Okay. These two are the things which I eat. And also the women with who have a like a belly fat or who are obese, I suggest them Karela. Okay. Karela is the one which is very good for insulin resistance. Amazingly it and I encourage them to take Karela in their salads. Not juicing. I don't advise them to juice it. Okay. Because nature has, I recommend always how nature has given, eat like that. ये जो करेला है आप ऐसे ही सलाद के साथ खाओ, उसके साथ आपको फाइबर मिलेगा. तो कच्चा करेला इतना बिटर ये सब चीज टेस्ट में बिटर रहती है, थोड़ा सा मैनेज कर लो फॉर योर हेल्थ. कभी भी
देखिए एवरीथिंग यू नीड नॉट सूट यूर दिस वन, टेक इट एज अ मेडिसिन, टेक इट फूड एज अ मेडिसिन। इसमें यू हैव टू थिंक दिस फूड इज माई मेडिसिन। राइट। मेडिसिन कभी भी बिटर रहती है। हम्म। थिन स्लाइस करो करेला, करेला को। सम पीपल दे ट्रीट इट विथ हल्दी, हल्दी सॉल्ट अच्छा भी डालते हैं उसमें बहुत सारा। साल्ट डाले तो उसका पूरा निकल जाती है वो जो रहते हैं। आई आस्क देम टू ट्रीट इट विथ लिटिल बिट ऑफ हल्दी। ओके। Wherein haldi and karela, when they are mixed, they are very good insulin resistance. It forms a very good insulin resistance. And put it in your, leave it for a while and put it in your salad. ओके। So that really helps them. Karela is another thing. And one more thing, what I suggest them is ashwagandha, ओके। which restores everything. Like it rejuvenates your whole body. In for ashwagandha, in Ayurveda, we call it as a rasayana. ओके। Rasayana means it's rejuvenator. It rejuvenates your whole body. And वुमेन कैन yes, टेक अश्वगंधा? yeah, they can take. They can take ashwagandha, especially for lean PCOS. Girls who have lean PCOS, they can take ashwagandha because it boosts their healthy body weight also. Because when they are lean, it is very, very important for them to increase their healthy weight. ओके। Then only the PCOS they will be able to reverse the PCOS. राइट। Alright. So for them, I recommend ashwagandha. And other things, I recommend them घर का खाना, like millets के खिचड़ी. ओके। रात में कुछ खाना है तो लाइट मिलेट की खिचड़ी बहुत पतला बना के खाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और यू कैन ड्रिंक अ बाउल ऑफ वेजिटेबल सूप. उसको कुछ मैदा गिदा कुछ नहीं ऐड करना है. एंड अनदर थिंग इज डोंट नेवर बाई एनी प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स, ये जो रेडी टू ईट आता है. एंड द वन विच आर सबसे पैक्ड ज्यादा विद बीमारियां तो इसी ने की हैं मैम, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड में 2 मिनट में नूडल्स है, हर चीज हर फास्ट। चीज का है. और ये जैम केचप, ये जो चटनियाँ आती है, सॉस आती है, और वो सब दे शुड नेवर ईट. आई एनकरेज देम टू प्रिपेयर देयर ओन मसालास इन होम एंड पिकल्स एट होम. सो डोंट गो फॉर एनी दिस वन प्रिपेयर्ड वन. अच्छा संडे में आपको कुछ ये हॉबी बनाओ, कुकिंग, राइट। हेल्थी कुकिंग करने का हॉबी बनाओ. सो इन माय कम्युनिटी गर्ल्स हु हैव लर्न डूइंग दिस, you don't believe Anup ji, they have made their whole family healthy. They were used to, even including their parents-in-law, they used to visit the hospital once in 3 months. Now their hospital visit has come down to once in a year. So once you educate a girl about the healthy food and healthy diet, the whole family becomes healthy. Very true, really, really, very true. It is really indeed required Yeah. because in school, colleges, this subject is not taught to the women, or even this healthy lifestyle subject, healthy living subject, क्या खाना क्या नहीं खाना, एक अच्छी हेल्दी लाइफ कैसे जीना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं जा रहा. मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा दिए गए हैं, राइट, लेकिन ये सब्जेक्ट सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए. सिलेबस This में is what इंक्लूड होना चाहिए. I मेरा feel. ये राय है कि from 8th itself, somewhere in the 5th or 6th, when we are putting the science, they should include the home science both for men and women, because Right. now these days both are working. Correct. And if a woman is busy, wife is busy, it's at least man can take care of the home. Correct. Right? They should include home science as a subject so that our kids can lead a healthy I life. think it was their home science was a subject like 15-20 years back. और अभी शायद हटा दिया. हटा दिए. But they have to increase from the basic, like as they include the physics, biology and chemistry, they have to include the home science as subject for a healthy lifestyle. All right. Great. So एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज जब पीसीओडी पीसीओएस है और इनफैक्ट जब डायबिटीज भी रहती है लोगों को, तो क्रेविंग बहुत आती है, राइट? हाँ. तो उन फूड क्रेविंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ टू कंट्रोल दिस फूड क्रेविंग्स? There are two types of craving. One is sweet craving. Okay. One is food craving. Again, as I told you, Hmm. craving is something which your body wants to talk to you. Okay. If you are getting a sweet craving, it means the water level in your body has reduced. Okay. So पहले आपको स्वीट क्रेविंग आया, कुछ नहीं करना है, जाके एक बड़ा ग्लास पानी पियो. Very Once you drink a big glass of water, the craving reduces 50%. fantastic. Right? And later on, just get up. It's because there is a relationship between craving and the place where you are sitting. ऐसे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे, खाना खत्म हुआ, कुछ लोगों को स्वीट खाने का आदत रहती है. Yes. Because that is the connection which our brain has developed with the dining table and the sweet. Okay. Right? That's where you get the sweet craving. At that time, order, as soon as you finish खाना खत्म करके उठना चाहिए. Get up from the place where you got the sweet craving. Because don't allow that to develop a connection between the place and the sweet craving. और जाओ बाहर जाओ, divert your attention, do some work. और तो sweet craving चले जाता है. Just it's 20 minutes. Give around 20 minutes, the sweet craving is gone. Okay. So here you have to understand one thing. When you have a sweet craving, it means your body is talking to you
and you need water. Amazing. Basic thing. And then still if you have sweet craving, अच्छा थोड़ा खजूर खाओ, नहीं तो fig खाओ, थोड़ा नहीं तो otherwise rices, Natural किशमिश, substitute natural rather substitute than है. going for refined. हाँ, Yeah. आपको जो आता है इसमें you will be getting minerals and other things, micronutrients तो मिलती है. Next coming to food cravings. जब भी हमको food cravings आता है, हमको ये लगती है कि we feel like eating chaats. हाँ, No कुछ salty तीखा and चटपटा. it's तीखा चटपटा खाना. Correct, correct. That is because your body needs some minerals or salts. Oh. Because of that you're taking it. So what I advise my girls, always keep a stock of cucumber, carrot in your fridge. और अच्छा बॉईल किए हुए चने वो सब फ्रिज में रख दो. जब भी आपको आया निकालो, थोड़ा उसको गरम करो, उसमें थोड़ा सा चटनी, पुदीना चटनी नहीं तो खजूर की चटनी डालो, रेडी हो गया आपका चटपटा खाना. खाओ, यू आर गेटिंग ए हेल्दी फूड, यू आर गेटिंग ए प्रोटीन एंड ऑल्सो तुम आपका स्वीट साल्ट क्रेविंग कम हुआ, साल्ट मिल गया बॉडी को. यू नीड नॉट गो आउट एंड ईट ए पानी पूरी और नीड नॉट गो एंड ईट ए सम पिज्जा और समथिंग लाइक दैट फॉर दैट. Right, right. Yeah. So how beautiful you said that if बॉडी हमारी बॉडी बता रही है हर समय से. क्रेविंग है तो बता रही है, वोमिटिंग है तो बता रही है, लूज मोशन है तो बता रही है, फीवर है तो भी बता रही है. These are the various signs and symptoms that we need to understand, and accordingly we need to change our lifestyle and we need to take care of all those symptoms. उसको इग्नोर नहीं करना है. इग्नोर नहीं करना है. This year I'll tell them, give 10 minutes for your body scan. Understand what your body wants to talk to you. I call it as a listen to your body. ये रूटीन हमारे पूरे लड़की लोग करते हैं. Every day they sit after meditation, after deep breathing, they will sit and they will scan their body. And so that's where you will understand what's happening with you. Great, great. So डॉक्टर सविता, आपने काफ़ी कुछ डिटेल में शेयर किया पीसीओडी पीसीओएस के बारे में, एंड खासकर टीनेजर जो यंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे. इट वाज रियली वेरी पावरफुल कन्वर्सेशन विद यू एंड आई लर्न अ लॉट बिकॉज बीइंग अ डायबिटीज रिवर्सल कोच बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं. मतलब बहुत सारी 99% चीज़ें कॉमन हैं. बस डायबिटीज़ हम मेल में एक्सपीरियंस ज़्यादा कर रहे होते हैं एंड पीसीओएस फीमेल में ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. एंड द रूट कॉज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो वेरी वेल सेड. और किस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच लेके हम रिवर्स कर सकते हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सविता मैम Thank you. फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड स्पेयरिंग अ वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग It's दिस my पॉडकास्ट. pleasure to be in your podcast, Dr. Anup, really. Because so far I was doing it when I was educating girls in my regional language, Kannada. But through you, I got an opportunity to educate girls all over India. Yeah. That was my real, this one. I am really happy for this opportunity and thank you so much. I'm really grateful for you for giving me this Thank you so very much. opportunity to give a podcast with you. Thank you. Thank Thank you. you so much. Yeah.